थर्ड सेमिस्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग प्रथम आम देखा बिल्डिंग को डिफरेंट कैटेगराइज कराई बिल्डिंग को ब्रॉडली आम कंपोनेंट गुड़ाक क्लासिफाइड करुचु ब्रॉडली माने ब्रॉडली क्लासिफाइड करवा गोटे आमर सबस्ट्रक्चर दैट इज बिलो द प्लिंथ लेवल जी रहा दैट इज सबस्ट्रक्चर एबो द प्लिंथ लेवल जो सुपरस्ट्रक्चर. So before going to explain this substructure and superstructure हमें first explain करिबा classification of building. तो हम building को classified कराई किए करचंती NBC करची that is National Building Code से classify करची A to I that is 9 types. So हमें देखिबा वर्तमान ओके ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रो दैट इज क्लासिफिकेशन आज पर एनबीसी जिते आम पढ़ा आम कौन कौन लर्न करिया कौन कौन सब आम लर्न करिया अकॉर्डिंग टू आमर ब्लूम टैक्सोनॉमी आम जहाँ भी पाठ पढ़ा आम ये 6टा कॉग्निटिव लेवल गोटे आमर रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग. सो टेक्निकल पाठ को आम बुझा पूर्व यही 6टा लेवल रे फास्ट आम बुझा. सो रिमेम्बरिंग कौन ना आम रिकॉल करवा मन रखा. सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट विल एबल टू रिकॉल द 9 मेन ग्रुप्स A to I as per National Building Code. So से मन रखा. द्वितीय अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स विल एबल टू एक्सप्लेन द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स of load bearing, framed and composite structures. Then another है applying. Knowledge apply करिबा. Student will able to apply माने application. गोटे जिनस तुम मन रखिलो रिमेम्बरिंग कलो अंडरस्टैंडिंग बुझिलो बुझला पर applying करिवो. The student will able to classify the given building examples into their respective NBC occupancy groups and identify their likely construction type. देन अप्लाई कला परे आम ताको एनालिसिस करिया माने तर्जमा करिवा केतिकी जिंस ठीक अच्छी राइट अच्छी कौन अच्छी केमिति कौन तो से जिंस बुझी पारिबो. स्टूडेंट विल एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एडवांटेज माने बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज माने द ड्रॉबैक ठीक अच्छी अनबेनिफिट ड्रॉबैक ऑफ लोड बियरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर. सो आगो को आम देखिबा लोड बियरिंग अच्छी फ्रेम स्ट्रक्चर अच्छी कंपोजिट स्ट्रक्चर अच्छी आगू से बुझेबी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. देन फिफ्थ वन है इवैल्यूएटिंग. इवैल्यूएशन माने आमे ताको एक्सेस करिबा माने केतिकी राइट अच्छी केतिकी रॉन्ग अच्छी से जिंस को आमे बुझिबा. तो स्टूडेंट विल एबल टू असेस द सुटेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकुलर कंस्ट्रक्शन टाइप फॉर ए गिवन बिल्डिंग सिनेरियो कंसीडरिंग फैक्टर्स लाइक हाइट फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेस्मिक रेजिस्टेंस. सम फैक्टर्स आर देयर हाइट को नहीं आम कंसीडर करवा फ्लेक्सिबिलिटी माने तर कंस्ट्रक्शन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कि आ सेस्मिक माने एर्थक्वेक रेजिस्टेंस होची ना नहीं से बिल्डिंग गुड़ाक. देन फाइनाली 6 नंबर है क्रिएटिंग माने नुआ जिनस आम क्रिएट करवा बा डिजाइन करवा. स्टूडेंट एबल टू प्रोसेस ए सुटेबल बिल्डिंग क्लासिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन टाइप फॉर ए हाइपोथेटिकल न्यू बिल्डिंग प्रोजेक्ट एंड जस्टिफाई देयर चॉइस. सो आम आसवा इंट्रोडक्शन एंड इंपोर्टेंस. सो प्रथम आसवा रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. सो प्रथम बुझा बुझा पूर्व प्रथम आम जाना एनबीसी टा कौन व्हाट इज एनबीसी व्हाट इज द नेशनल बिल्डिंग कोड. सो ए कम्प्रेसिव सेट ऑफ गाइडलाइंस इश्यूड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस कौन करछि सम गाइडलाइन इश्यू करिछि कोनोसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करिया पूर्व जे ए बिल्डिंग टा को कैटेगरी रे जिवो सीटा बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कैटेगराइज करिछि सम गाइडलाइन प्रोवाइड करिछि. सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी फॉर फायर स्ट्रक्चरल हेल्थ एंड वेलफेयर इन ए बिल्डिंग डिजाइन इन कंस्ट्रक्शन. सो यही जो पॉइंट गुड़ाक से कंसीडर कराइछे जेतेबेले यही बिल्डिंग को क्लासिफिकेशन कराइछे. देन अनदर पॉइंट होछि
ensure structural stability, public safety and optimal use of space। तामाने कौन स्ट्रक्चर स्टेबल हे जब फेलर हेबनी एवं जिते पब्लिक ताको यूज करिवो सेफली यूज करिवो कौन सी ताको हैम्परिंग हेबनी एवं जिते मैक्सिमम यूज हेई परिवो सेही बिल्डिंग रो स्पेस गुडा एई सब कंसीडर गुडा करिकी बीआईएस कौन करछि ना एनबीसी गोटे कोड गाइडलाइन गोटे डेवलप करिछि। सो व्हाई इज क्लासिफिकेशन इंपोर्टेंट ए क्लासिफिकेशन करिवार उद्देश्य कौन कौन से जरूरी इंपोर्टेंट डिफरेंट बिल्डिंग टाइप्स हैव डिफरेंट रिस्क। सो जिते गुड़ाक बिल्डिंग अच्छी जिते कैटेगरी अच्छी तार डिफरेंट रिस्क गुड़ा रही फॉर एग्जांपल फायर ऑक्युपेंसी लोड एंड हैजार्ड हैजार्ड माने डेंजरस जिनस कह हैजार्ड एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल सिस्टम्स बिहेव डिफरेंट अंडर लोड्स। सो जो स्ट्रक्चर अच्छे तार सी जो बिहेव कर डिफरेंट लोड को नहीं डिफरेंट स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को बिहेव कर helping in apologizing appropriate buildings regulation safety measures and design consider। so next aso classification of building as per NBC जदि आमे क्लासिफाइड करिबा NBC जो क्लासिफाई करिछि on the basis of occupancy आमे जस्ट स्टेइंग रहबा स्टेइंग को नै बेसिस जनरली occupancy आमे से वास करिबा ताकू नै क्लासिफाइड करिछि। one is a residential building तो सपोज ग्रुप ए होची रेसिडेंशियल बिल्डिंग एनबीसी करिछि तो प्रपोज कोन लिविंग एंड स्लीपिंग अकोमोडेशन एतरा कोन केवल रही पारिबो एवं सेतरे सोई पारिबो सेही सुविधा दिया हेतिबो से बिल्डिंग को बा सेही सुविधा थिबा बिल्डिंग को आमे कहबा रेसिडेंशियल बिल्डिंग। देन अगेन ए जो ग्रुप ए को अगेन कैटेगराइज कराई सब ग्रुप कराई A1 to A6 for example lodging houses private dwellings dormitories apartment and hotels। so residential building example is an apartment complex or a stand-alone bungalow these are the example of residential building। then also NBC group B NBC group B is educational buildings proposal education training care of a children or adult सब ग्रुप रहा B1 B2 रहा स्कूल अप टू सेकेंडरी स्कूल पर्यंत रहा और ट्रेनिंग सेंटर्स ये आम सब ग्रुप अंडर आसो। आ जो मेन ग्रुप करवा एजुकेशनल बिल्डिंग फॉर एग्जांपल प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देन ग्रुप सी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग दैट इज एजुकेशनल बिल्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग मीन्स for example a district hospital and old age home this comes under institutional building। proposal kono medical treatment institutional care limited liability सब group category C1 to C3 hospitals orphanages jails mental institution। then come to group D assembly buildings assembly building रो propose kono public gathering pro recreation social रिलीजियस कल्चरल ट्रैवल ए जिनस जदि से बिल्डिंग रे हमें से जिनस ए जो हमरो रिक्रिएशन सोशल रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रैवल पर्पस रे यूज हो देन बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट करबा ताको कहबा हम असेंबली माने गेट टुगेदर होबा। देन अगेन एक सब कैटेगराइज कराई छी D1 टू D7 थिएटर्स ऑडिटोरियम स्टूडियो मल्टीप्लेक्सेस एग्जांपल है सिनेमा हॉल एंड कम्युनिटी प्रेयर हॉल। देन कम टू ग्रुप E business related building by business building proposal of business transaction and professional services। so business को again categorize 1 to 5 categorize like office banks laboratories call centers etc। ये हम सब ग्रुप रे आ जो बिजनेस बिल्डिंग रे एग्जांपल देबा में कॉर्पोरेट ऑफिस टावर एंड a bank branch। then next come to mercantile building proposal display and sales of merchandise माने related to goods okay again is merchandise again go divide करचंती F1 to F3 for example shop store department store malls example है supermarket shopping mall। the next come to group G industrial building रो proposal manufacturing processing assembling again याको 3 categories कराई group 1 to group 3 low moderate high hazardous industries।
For example, given a textile factory and a food processing plant. These buildings comes under industrial building. Then one is storage building. Proposed storage of sheltering of goods, vehicles and animals. Subgroup ହେଲା warehouse, cold storage and garage. Example ହେଲା ଆମର ହେଲା public warehouses, multi-level parking garage. This comes under storage building. Store को रखियो ଆମେ. Then last one is hazardous building ମାନେ very dangerous or very dangerous बेसी precaution ନେବାକୁ ପଡେ ସେଇ building को construction time रे और maintenance time रे because hazardous ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେ building ରେ store ହେଇକି ରହିବ। Purpose ହେଲା handling and storage of highly combustible ମାନେ ଟିକେ ନିଆଁରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡାକ ଜଳିଯାଏ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡାକ ଦିଆସିଲ ଗୁଡାକ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ପଏଜନସ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କି ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡାକ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ମେଟେରିଆଲ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜ ହେଇପାରେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା କେମିକାଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ and petroleum storage facility. This comes under hazardous building. So then ଆମେ ଆସିବା classification and types of construction. Classification by types of construction. ଆମେ जो construction କରିବା ତାକୁ again classified କରାଯାଇଛି। କଣ ଆମ syllabus ରେ ଅଛି? One is a load bearing structure, another one is frame structure, okay, and third one is a composite structure. So प्रथम आसीबा हम load bearing structure कौन। First बुझिबा load bearing structure टा कौन। How the building transfer its loads. Building transfer load माने for example slab transfer करियो का पाको beam को, beam transfer करियो का पाको column transfer करियो foundation को। एटा केतेले ना फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब बीम कॉलम रहला दैट इज फ्रेम स्ट्रक्चर जोउतरे बीम आ कॉलम नाही बट वॉल कंस्ट्रक्ट कराइछि से वॉल माध्यम रे हमरो फ्रॉम फ्लोर टू ग्राउंड पर्यंत लोड ट्रांसफर हो जाउछि। सो सेही वॉल को हमें कहबा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हाउ द बिल्डिंग ट्रांसफर इट्स लोड्स वेट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑक्युपेंट्स ऑन फर्नीचर टू द ग्राउंड। से जा भी हो बिल्डिंग रो निजर ओजन हो आउ से कि रहउछंती क्षेत्र जे फर्नीचर गुडा कास चेयर टेबल जहाँ भी अच्छे से ग्राउंड को ट्रांसफर करुचे। सो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर कौन आम डेफिनेशन जदि कहवा वॉल आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स कैरिंग ऑल लोड्स नो डिस्टिंक्ट फ्रेम्स और कॉलम्स ऑफ द बीम। सो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है वॉल जो आम कॉलम और बीम प्रोवाइड कर केवल वॉल थी जी टोटाल लोड को ट्रांसफर करुचे कोडी को फाउंडेशन को फाउंडेशन ट्रांसफर करवा सॉइल को। सो लोड ट्रांसफर पाथ है स्लैब और रूफ हो सी ट्रांसफर कर लोड का वॉल को वॉल लोड ट्रांसफर कर फाउंडेशन को एंड फाउंडेशन ट्रांसफर कर ग्राउंड। सो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर किसी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी वॉल्स आर थिक जदि जो आम वॉल कंस्ट्रक्ट तार उड्थटा बहुत हाई माने मोटाई थाए। फॉर एग्जांपल आम मेसिनरी यूज करवा दैट इज ब्रिक एंड स्टोन यूज करके आम वॉल करवा। लिमिटेड हाइट आम अधिक हाइट करि परिबानी स्ट्रक्चर को। सो टिपिकली 2 to 3 स्टोरेज बिल्डिंग पर्यंत आम यूज करि परिबा। समटाइम्स 4 विथ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑन गुड सॉइल। सो मैक्सिमम आम 4 यूज करवा इन केस ऑफ सेतरे जो कंस्ट्रक्शन करा जो बिल्डिंग जार जो सॉइल गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल थो गुड सॉइल इन द सेंस जार सॉइल बियरिंग कैपेसिटी अधिक। फॉर एग्जांपल हमरो ग्रेनाइट सॉइल थिबो बा हार्ड सॉइल थिबो स्टोन सॉइल थिबो से वाला सॉइल रे आम कंस्ट्रक्शन करि परिबा ए लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। लेस फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इंटरनल लेआउट चेंजेस as well as walls are structural। तो आम मन इच्छा मझिरे आम चेंज करि परिबानी।
सो देख ये हूँ डायग्राम में लोड बियरिंग स्ट्रक्चर केवल वाल तैयारी होते नो फ्रेम थाए सो फ्रेम स्ट्रक्चर रे आमे दिस इज अ बीम दिस इज अ कॉलम सो दिस इज ए जो डायग्राम टा होछ हमर फ्रेम स्ट्रक्चर ये होछ हमर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर ओके सो ये लोड बियरिंग डायग्राम देखेली नेक्स्ट जीवा फ्रेम स्ट्रक्चर consist of skeletal framework for interconnected beam and column so beam and column connected heito okay that carry loads wall are non loading bearing so जेतले जे wall जदि construct कराइतो सेटा केवल पार्टीशन आकार काम करिवो so load transfer केंति करछि slab रो जो beam रो जो column रो जो foundation and foundation finally transfer कर ground को बा soil को so ए जो frame structure character कोन कोन रहइबो walls are thin जेहेतु पार्टीशन आकार यूज करा होछि as a panel wall or curtain wall primarily for enclosure and partition एरा को क्लोज आकार यूज करा होछि किबा पार्टीशन आकार यूज करा होछि सेति पय wall ओडा ते थिकनेस न थाए suitable for multi story building and high rise building so ए suitable कोडी multi story building और high rise building रे suitable हेबो frame structure and high flexibility for internal layout changes so जदि तमे तो मैंने जितने डिजाइन करूँ भितर जदि आम कि चेंज करि परिबा वॉल पार्टीशन करिकी तो ये बहुत सुविधा होता है यही फ्रेम स्ट्रक्चर तो यूजेस आरसीसी सो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट और स्टील सो फ्रेम स्ट्रक्चर आम जदि मेटेरियल यूज करबा दैट इज हमर आरसीसी हो कि आम स्टील हो ये जिनस मेटेरियल आम यूज करबा एज अ फ्रेम स्ट्रक्चर एंड एक्सीलेंट सेस्मिक रेजिस्टेंस सेस्मिक माने अर्थक्वेक भूमिकंप बहुत भल रेजिस्टेंस कर आज कंपेयर टू द बेटर इन लोड बियरिंग लोड स्ट्रक्चर इफ डिजाइनेटेड करेक्टली ड्यू टू द डक्टाइलिटी बिहेवियर माने एटा इलास्टिसिटी वाला फ्लेक्सिबिलिटी अछि हैला सो एग्जांपल ला मॉडर्न अपार्टमेंट बिल्डिंग्स ऑफिस टावर्स एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस ये ला हमरो फ्रेम स्ट्रक्चर सो नेक्स्ट फ्रेम स्ट्रक्चर माने कोन यदि हम सिंपली शॉर्टकट जानिया चाहूछु columns and beams bear the load and walls are non-loading bearing and materials are RCC steel and composite भी पारे suitability code the high rising building group E F D or group है पारे that is a multi storage building रहबो advantage है flexible design and earthquake resistance okay the limitation है higher cost and complex construction एरो drawback है initially बहुत higher cost है and design भी बहुत complexity था सो आम आसवा देन फ्रेम स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गला आम देखला कंपोजाइट माने फॉर एग्जांपल फ्रेम स्ट्रक्चर सपोज फ्रेम स्ट्रक्चर आरसीसी रही और से आम स्टील प्रोवाइड करवा दैट इज कंपोजाइट स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल आम जब डायग्राम देखिया कंपोजाइट स्ट्रक्चर देखे दूसरी कंपोजाइट स्ट्रक्चर सॉरी for example this building ये आरसीसी फ्रेम आउटसाइड डिजाइन है कौन स्टील प्रोवाइड कराई सो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटेरियल नहीं डिजाइन है फॉर दिस वन एग्जांपल आल्सो ओके बहुत गुड एग्जांपल अछि देख परिया दिस वन आल्सो this one RCC frame है that RCC frame structure और steel आम outside use कलु so this is called आमरो composite देखिला composite माने different material को नहीं कि mix है कि गोटे structure तेरे तो ताकू कह जामे composite structure definition ला combination of elements of both load bearing frame structure or combine different structural material load bearing है तो क्या frame है तो otherwise some different material suppose steel and concrete को नहीं तो आज सिंगल यूनिट के यूज हेतु ताको हमें कहबा हमर कंपोजिट स्ट्रक्चर सो लोड ट्रांसफर पाथ कोन हाइब्रिड टाइप रो इन्वॉल्व बोथ लोड बियरिंग एलिमेंट्स एंड फ्रेम एलिमेंट्स यार कैरेक्टर गुडा कोन रहबो
utilize the strength of different systems and materials. Outer wall might be load bearing, while internal space used as a frame system for a large span, and can be more efficient in terms of material uses and specific functional requirement. Okay. So मेटेरियल हाइब्रिड जो स्टील कंक्रीट ब्रिक आरसीसी मिक्स स्टील और कंक्रीट नहीं पारे ब्रिक और आरसीसी नहीं पारे आ स्टेबिलिटी मीडियम राइज बिल्डिंग नॉट वेरी लो नॉट वेरी हाई बिल्डिंग गुड़ाक आम कंपोजिट स्ट्रक्चर यूज कर एडवांटेज बैलेंसिंग कॉस्ट और स्ट्रेंथ बैलेंस लिमिटेशन रिक्वायर केयरफुल डिजाइन कोऑर्डिनेशन बिकॉज बहुत केयरफुल कंसीडर करा बिकॉज टू डिफरेंट मेटेरियल नहीं कि तुम स्ट्रक्चरटा डिजाइन करता सो मन कर अप्लाई करवा application माने कोडी application हो फॉर एग्जांपल मैच द फॉलोइंग बिल्डिंग्स टू देयर सुटेबल कंस्ट्रक्शन टाइप फॉर एग्जांपल 10 स्टोरीज ऑफ ऑफिस टावर स्टोरी ऑफ ऑफिस टावर हमें को स्ट्रक्चर को नेबा लोड बियरिंग फ्रेम ना कंपोजिट सो इन द केस हमें फ्रेम स्ट्रक्चर नेबा बिकॉज यार हाइट अधिक विलेज हाउसेस सिंगल स्टोरेज ग्राउंड फ्लोर ओनली रहबो सो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर कहउछ हॉस्पिटल साधारणतः हमर कंपोजिट हेबो बिकॉज हॉस्पिटल आरसीसी फ्रेम एंड ब्रिक वॉल्स दीटा को कंस्ट्रक्शन एग्जांपल हमर कंपोजिट स्ट्रक्चर हमर कंपोजिट सरला अप्लाइंग करला एनालिसिस सो वर्तमान असेसमेंट करवा क्वेश्चंस गुड़ाक आम छटा जो कॉग्निट लेवल थिला हमर बिल्डिंग रो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन structure that is load bearing framed and composite again classification of buildings as per NBC so आम छोटा level remaining understanding applying analyzing evaluating and creating so remember आम कौन list 3 example of group C building रो कौन example देवाक पड़िबो so remaining under आसीबो understanding है differences between load bearing and frame load bearing और frame structure रे difference कौन एंड अप्लाई करा अप्लाई से ये जो एप्लिकेशन करवा अप्लाई करवा व्हिच कंस्ट्रक्शन टाइप इज बेस्ट फॉर हाई राइज हॉस्पिटल एंड व्हाई जो तीनटा टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी लोड बियरिंग फ्रेम्ड एंड कंपोजिट तो तांको भितर कोडा हमें सिलेक्शन करवा फॉर हाई राइज बिल्डिंग एंड व्हाई काहे की द एप्लिकेशन अप्लाई कलु तब एनालिसिस व्हाई आर फ्रेम स्ट्रक्चर प्रिफर्ड इन अर्थक्वेक जोन सो हमें एनालिसिस करवा जे अर्थक्वेक जोन बा भूमिकंप जो एरिया रे होची सेतिरे हमें फ्रेम स्ट्रक्चर काहे प्रिफर करो व्हाई नॉट लोड बियरिंग व्हाई नॉट दैट इज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर देन फिफ्थ वन है इवैल्यूएटिंग क्रिटिकल असेस द लिमिटेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रक्चर सो हमें फॉर एग्जांपल लिमिटेशन देखिबा कंपोजिट स्ट्रक्चर कोन ड्रॉबैक अच्छी से गुडा का एक्सेस करबा एंड लास्ट वन इज सिक्स्थ कॉग्निट लेवल है क्रिएटिंग बा डिजाइन करबा डिजाइन ए कॉन्सेप्ट ऑफ ए ग्रुप डी बिल्डिंग यूजिंग ए हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन अप्रोच हाइब्रिड माने कंपोजिट मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मेथड कंप्यूटर तक डिजाइन करिया सो आज पई एतिकी आम आज पढ़लु आम कौन क्लासिफिकेशन पढ़लु एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सो ता सहित आम पढ़लु कौन ता सहित